Mandeep Rawat. Could you please tell us about yourself? Sir, my name is Mandeep Rawat. Staying here in Guwahati, sir, my family. I did my high secondary from Khurdan College, and I did my graduation in electronics and electrical engineering from IIT Guwahati, and passed out from there in 2015. After that, I ventured into coaching center. I and two of my friends, we ventured into coaching center. We helped the poor students to clear their engineering and medical entrance examination. And so besides that, I was also involved in an event management startup. After that, I began preparing for the civil service examination. You are a co-founder of an event management company. Yes, sir. Still, this company exists Sir, no, right now it doesn't exist, sir. because of COVID. So not because of COVID, sir. Actually, I left it because I decided to study for civil service. And you also had some kind of thing, क्या बोला था? So, और एक आपका entrepreneurship. yes, sir. So, executive education. So, that was a coaching center, sir. Still running. So, no. Sir, I totally stopped them. So basically, you come to ACS because you are trained as an entrepreneur. Sir, I don't think it is a failure, sir. So, though financially, I think I was a failure financially, but as an experience, I don't think it's such a failure. So, because I learned a lot from there, and we are success. I was especially it was very good experience for me. We were very successful in putting candidates through IITs, and in this particular अगर ये चलता रहता yes, sir. तो क्या आप आते हैं इस इसमें नहीं आते? Sir, so that is a hypothetical question, sir. So I do अच्छा not. खासा पैसा देता आपने Yes, sir. I can. Yes, sir. तो because you are a freelancer, so you can do this. तो इसमें भी अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा फिर entrepreneur अलग से लगाओ क्यों आप बताओ ACS में क्यों आए मतलब क्यों सिविल सर्विसेज में आए? So can I speak in Assamese? Sir, after engineering, then I started to look naturally. What I want to happen for the first coaching center to look then event management. So duta sector মই দেখা পালো স্টুডেন্টসে কি প্রবলেম ফেস কৰে আৰু ইভেন্ট মেনেজমেন্ট এন্টাৰপ্ৰেনাৰ্সে কি প্ৰবলেম ফেস কৰে সো দেখি উনি আৰু মই এইটা বস্তু মানে মই ট্ৰেভেলো কৰিলো বহুত দেন মই অসমত ট্ৰেভেল কৰিলো কিছুমান জায়গা দেন মই দেখিলো যে অসমৰ নট অনলি ইন এডুকেশ্যন সেক্টৰ বা এন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ সেক্টৰ বহুত জায়গাত প্ৰবলেম দেখিলো মই হেল্থ সেক্টৰ এডুকেশ্যন সেক্টৰ আৰু আপোনাৰ চেনিটেশ্যনছ আৰু গাঁৱৰ মানুহবিলাক যেতিয়া মই গাঁৱত যাওঁ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে স্কিমছ নাপায় ভালকৈ স্কিমছ ৰিপ্লেচ কৰিব নাজানে So মই ভাবিলো ৰিয়েলাইজ কৰিলো যে মই আৰু ইয়াত নেক্সট ষ্টেপ যাব পাৰোঁ মই তেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিলো যে চিভিল চাৰ্ভিচ মোৰ কাৰণে বেটাৰ চইচ হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আপোনাৰ অপচনেল সাবজেক্ট কি আছিল? ছাৰ ফিজিক্স এণ্ড এডুকেশ্যন Physics and education. Education and physics. Also, you are a student of electronics engineering, right? Yes, sir. So, what is VLSI? Your difference is better regarding electronics or not? Yes, sir. Sir, I'm unable to recall right now the correct full form of VLSI. Okay. So, what is the difference between antenna? Say, tell me something about how radar functions. Okay. Function of radar. Rather, okay, so basically, it's a form of wave. The instrument sends a form of wave, and when it strikes the object, it returns back, sir. So, and upon calculation, going time and turn time, we can predict the image of the object. Accuracy, what is the accuracy? Least count of accuracy? How much in radar, in case of radar? So, I'm unable to recall right now. Okay. Tell me something. What is 5G and what is basic difference between 5G and 4G? Sir, I beg your pardon. 5G. What is 5G? 5G technology. And what is difference between 4G and 5G? So basically, 5G is a new technology, and it will have a better hardware, and it will have very less latency than the 4G, and but Very less latency. latency. Yes. Okay.
But more or less they have the same background, like they both use radio waves. So, but through 5G, more energy can be transferred. That's why there is less amount of latency, sir. Energy in terms of data. Yes, sir. Okay. So what is this frequency band? 5G. 5G frequency band. Sir, I'm unable to recall that. Okay. Tell me about simple harmonic measure. And what is amplitude? How it is related to wavelength? So simple harmonic motion is simply an oscillation of a particle from its rest position in a period of time. So, and the amplitude is the maximum displacement it can go, and the wavelength is the distance between the two high crest or trough. So it's Okay, one thing. You have there are 100 number of steps. You went up and came down. Yes. What is the work done? So if I go up and go down, so if the displacement is zero, then I think the displacement is zero, and if we count in the displacement as a factor, then we'll get the zero work done. Sir. Okay, but you lost energy. No? Yes, sir. And how will you explain that? Sir, if I go up, sir, I will attain the potential energy, and if I come down, I will lose the potential energy and it will be converted into kinetic energy. So there will be energy loss. So I at a height of 8 kilometer, I release two balls. One is 5 kg, other is say 400 grams. At what time will the ground reach? Both they will reach simultaneously, or they will take one will take less time, one will take more time. So according to my knowledge, they will reach in the same time. How? Sir, so I am unable to recall right now, sir. Okay. So have you heard of Doppler effect? Yes, sir. What it is exactly? So basically, Doppler effect is an effect when. So can I give an example, sir? So let us say there is an ambulance, so it's going. Let us say I am in frame of reference, and the ambulance is going with its siren on. So when it goes in front of me and it goes further, so I will hear the sound, the magnitude of the sound decreasing, and when it comes near. If the ambulance comes here, I will hear the magnitude of the sound increasing. So, sir, this term is known as the Doppler effect. Okay. Thank you, sir. Mandeep Raghavan. Sir, Vishnu Baba Raghavan option. sir, Vishnu Ravar, তেখেতক শ্ৰদ্ধাপতি ৰাধাকৃষ্ণ দেৱে তেখেতক কলাগুৰু টাইটেল দিছিল তেখেতে। ইখানে কলাগুৰু বুলি কৈছিলে। সো তেখেতে বহুত ধৰণৰ কাম কৰিছে, কলা নিজৰ নাটক লিখিছিল, ছাৰ নাটক পইণ্ট লিখিছিল। সৰ আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিত বহুত বৰঙণি আছে তেখেতৰ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক প্ৰথম কোনে আঁকিছিলে? ছাৰ তেখেতে জানিছিলে। ছাৰ মোৰ নলেজত সেই চাব লাগিব ছাৰ। চতিয়া ৰাজ্য কোনজন আহোম ৰজাই এনেক্স কৰিছিলে? ছাৰ ৰাইট নাও মই আপুনি সাউথ বেংকৰ পাঁচখন বিভূতিৰ কওকচোন ব্ৰহ্মপুত্ৰ সাউথ বেংকৰ। সাউথ বেংকৰ ছাৰ মৰা ডাফলা মৰা sorry sir
सब्जेक्ट के बारे में आपको you need to take rest of your electronics, very basics, VLSI, you don't know. So these are very popular terms in electronics. Antenna, like this. One you go through. Mainly you go through latest technology. Yes, I also have 5G. It is 25 gigahertz, more than that. Gigahertz based radio frequency. It is more than above frequency is very high than the 4G. That has more wider bandwidth. So you can charge in technical term, not energy or like that. You are transmitting data, not energy. So also when I was Doppler effect, you take an example. First you define, then you can cite example. So take a deep knowledge. Okay, cover your concept, improving major concept, light, sound, these are major concepts. Then you will do it. ये ऑप्शनल ही तो फिजिक्स Optional physics. वो तो आना ही चाहिए I am actually रिकॉल वो जो आपने बोला ना हर बात पे I cannot recall it, I cannot. This is not good. If you don't know, say sir I don't know. Recall means you know something, but you cannot able to recall. Static. Got it? it becomes Right, very exactly. because you like that person say I cannot recall तो ये impression क्या है तो वो पता है तो उसको स्टैंड नहीं होता हाँ इस टाइम नहीं होता है जानबूझ के नहीं करना चाहते हो अपने आप को समझना है ऐसा से I don't know. अच्छा इनके फैन porque separado de mí no ayuda a un después para ya que ahora किसी को भी डिफरेंस कंपनी चाहिए बहुत ही इसका Okay, more from the Gambola option. तुम get that simply हो रहा है yeah Be confident. you can be a little louder also आप आज जैसे बोलो उससे भी एक दो पिच ऊपर जा सकते हैं बाकी सर एखादी जो एग्जामिनेशन मध्ये सर एखादी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आहे और गुड नहीं आप बहुत करना है इवेंट मैनेजर में आप करना है जो सुना है सर आपको इवेंट मैनेजर के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं हाउ टू मैनेज इवेंट व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स दैट यू लुक ऑफ द आपने कैसे मैनेज किया आप सीरियल also you need see the local regular blending you will know all about the events event manager the key for the success of the event और एक बात बताओ अगर सीधी नहीं की है नहीं सीधी है। एसीएस में आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो Double form. फॉर्म में अगर फॉर्म अगर लिखिबल होगा ना करें Hindi দিব বাদ দিয়ক। फर्स्ट মই सर কিন্তু स्पेसिफिक डोनर्स वाला है मतलब मूवी को लेकर सब डोनर्स बाकी ठीक है तब तो तुम जब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बोलेगा ना ठीक है तो उसमें तुम बोल दो I like to watch this आई लाइक टू वॉच साइफाई मूवीज ना वो दूसरे लोग साइफाई আৰু তাৰ মানে অলপটো আপোনাৰ অলপ হেৰিৰ থাকিব কি বুলি ক'ম মই এজেণ্ট মানুহ থাকিব চ' আপোনাৰ সেইটো লেভেলৰ যে আমি যিমানখিনি বস্তু জানো এতিয়া তেওঁলোকে এটা ৰিলেটেড টু মডাৰ্ণ টেকনলজি অলপ কম জানিব পাৰে প্লাছ পইণ্ট আছে but ये देखो OTT पढ़ के जाना ये हमेशा अगर तुमने मूवी बोला तो OTT आया চাইফাই মুভি মানে কৰিম OTT टेक्नोलॉजी पढ़ेगा और मूवीज बोलेगा तो वो नासिरुद्दीन शाह और वो जमाने शाहबाज मेरे जमाने में मेरे को पूछा था मेरा भी था वॉचिंग मूवीज तो मेरे को पूछ दिया था उधर अभिमान के टाइम का उसको तो पारा से पूछ रहे हैं প্ৰাছে ইনষ্টল মেথড ठीक है দিদি সমস্যাৰ दिलीप कुमार माधव इंडिया वाले टाइप का हो सकता है सर মানে बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन है नहीं बोलते ओपिनियन बेस ओपिनियन बेस में तुम स्ट्रक्चर करना what my question that question बोल देता हूँ describe the crop patterns of asam কেনেকুৱা লাগিব ना crop pattern को crop तो तुम्हारे पास 2 मिनट टाइम होगा तो तुम ये बोलना कि यहाँ पे मौसमी पता बेसिस बोले और बोल को ৰবি ক্ৰপ খাৰিফ ক্ৰপ সেগুলো বলি ঠিক আছে আমাদের পবিত্র খাদ্য করতে হয় আর পরিমাণ পরিমাণ বেশি জাস্ট সিম্পল কে তুমি 5 সেন্টেন্স করে দিবে তুমি কথা বলতে 100% কারেক্টনেস না লাগে কনভিন্সিং কনভিন্সিং করে तो बॉडी लैंग्वेज तो ঠিক আছে
इट्स ओके सर क्या पॉजिटिव है नहीं सर पॉजिटिव अभी आपको पता चल जाएगा, बट आप जॉगिंग इंक्लूड करिए, आपका वही तरीका है करने जाने का। हाँ। ठीक है, पॉजिटिव यही कि आपका बॉडी लैंग्वेज पोस्चर ओके है, बट यू नीड टू आउट एक्सप्रेस लिटिल बिट मोर लाउडर एंड विथ योर सराउंड नॉलेज। अपने कम्युनिटी के बारे में, असम के बारे में मैक्सिमम नॉलेज अपने का। ओके थैंक यू सर।